Hello guys and welcome back to the channel. Today is another special day because मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो एसी रूम्स है उनका भी एक व्लॉग बनाओ. सो आई थॉट व्हाई नॉट, आपको वो व्लॉग जरूर बना के दिखाया जाए. एंड टुडे इज दैट डे जब आपको वो व्लॉग या एसी रूम्स का टूर देखने को मिलेगा. सो लेट मी गो टू द हॉस्टल्स एंड शो यू हाउ डज द एसी सिंगल रूम लुक. एंड देन in another video you will get to see how AC sharing room looks. Coming to hostels, ये हमारा H4 हॉस्टल है. यहाँ पे यू कैन से कि हर एक रूम में एसी लगा हुआ है. बट H3, H2 एंड H1 ये तीनों जो हॉस्टल्स है ये नॉन एसी हॉस्टल्स है. लेट्स गो इनसाइड द H4 हॉस्टल एंड लेट मी शो यू हाउ माय करंट रूम लुक्स. दिस इज द AC room and this is how they look. Now this is the sharing part of it. Let me go to the single part of it first. Now लाइट सारी की सारी बंद है तो अपन लाइट चालू करते हैं सबसे पहले. And yes, there you go. This is how the single AC room looks. Now you get a double bed over here. That's the best thing. Then you get similarly two lights, a big cupboard with four, compartments. Then you also get a table with bookshelf at the top जहाँ पे ऊपर और भी कुछ स्टोर करना है कर सकते हो. Again huge size curtains, a chair, then a bedside drawer and इधर हमें मिरर मिल जाता है. तो ये बेसिक अरेंजमेंट है अपना एक एसी रूम का, जिसमें द बेस्ट थिंग इसकी बेड सबसे बड़ा है. ऑब्वियसली ये कुशन और मैट्रेस का मतलब बेड शीट और ऑब्वियसली ब्लैंकेट ये खुद से लाना पड़ता है. सो ये जो मैंने हुक्स लगाए ये स्टिक किए हुआ है. बट अदर देन दैट दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट दैट यू गेट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट थिंग दैट वी हैव ओवर हियर इज look at this. You get a huge balcony, which is literally the best thing that we have over here. Now look at this view. Here we have tennis courts, then basketball court, pickleball, badminton, essentials block. Look at this. Also the next phase construction has started, so this is the view that we get from our balcony. And then along with that we also get these two cloth ड्राइंग रैक्स. एंड ये बालकनी यहाँ पे एक्सटेंड होती है जहाँ पे यहाँ से वापस अपना जो डबल शेयरिंग रूम है वो है. सो बेसिकली दिस इज हाउ आवर रूम लुक्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम द रूम द थिंग्स दैट वी हैव इज वी हैव अ वॉशरूम. यहाँ पे वॉशरूम में लेट मी शो यू ब्रीफली. वी गेट अ बेसिन एंड दिस शावरिंग एरिया एंड देन दिस टॉयलेट. So this is how the washroom looks. And apart from the washroom we also get a kitchen. Now let me show you how the kitchen looks. So basically the kitchen looks, this is shared between all the three people that are living in this flat, where you have trolleys, you have sink, you have a platform, and this cupboard is of one of the guys from the sharing. And you also get this shoe rack. Again, this is shared between all the three people that are living in this house. On each floor you do get washing machine, you do get a water filter, and there is one BVG helper that is there on each floor. This is how a single AC room looks like at IIM Nagpur. Let me know if you have any doubts about this room. I will update you about everything. And yeah, obviously AC dikhana reh gaya. Ye raha AC. So do comment down your doubts. I will make sure that I will answer maximum possible of them. Apart from that, this is for this video. I hope you enjoyed it. If you did, then make sure to hit the like button, subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.